हेलो गाइस। यार मुझसे एक तो ये ठीक से होता नहीं यार, ये कैसे करते हैं मुझे पता नहीं। बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग टू गो लाइव फॉर द लास्ट 10 to 15 minutes एंड नहीं हो पा रहा था यार। वो थंबनेल नहीं आ रहा था कुछ, तो मैंने फोटो लिया, फिर मैन्युअली पता नहीं, पहले तो थंबनेल ऐसे ही अलाउ कर देते थे, अब नहीं करने दे रहे फॉर सम रीजन। सो दैट्स व्हाट्स अप। It's been a while since I did a live stream, so that's why I just decided to go live today. And I have been working today. I have been working a lot today, but I love doing that. I love working. I love working as much as I can. I love learning as much as I can, yaar. I don't even know what I'm saying at this point. I should be looking at the camera, right? I should be looking at the camera and everything. Actually, why don't I do this? I can now stream using my camera. I should my phone camera. मेरा phone का camera इससे better है यार. Should I bother doing that? Should I go live using my phone? मैं अपने phone में एक stand लगाकर ऐसे कर सकता हूँ अगर, बट कौन करे यार, पता नहीं, मुझे इतनी आलस आ रही है, इतनी आलस आ रही है मुझे। आलस आलस बहुत खराब चीज़ है यार, नहीं करनी चाहिए आलस। एनीवेज, तो यार अगर मैं आपको बताऊँ मेरे दिन के बारे में एंड अबाउट हाउ माय डे वेंट, तो यार वही यार, मैं सुबह उठा, सुबह से ही आई हैव बीन ट्राइंग टू work on stuff. I have been working on stuff. By stuff I mean content, of course. I have been working on content. I have been working on ideas. I have been working on problems. फिर मैंने ये वही यार, I've been thinking about my long term goals as well, and I was planning that what I would do in the future and how I would do it. I have been very excited always for the idea of doing things in a very disciplined, militaristic manner. I think for a person like me, it would be really easy. It would be better if I can just do things in a militaristic way. मतलब जो लोगों को बोरिंग लगता है ना, मुझे बोरिंग पसंद है. If it's boring, I like it and I prefer it better. The more complex a thing gets, like मतलब basically by complex I mean जब आपके रूटीन में 10 चीजें हो ना, तो आप कोई भी चीज पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते हो. But if you're the more streamlined your routine is, the more you can just wake up and you can focus on one thing. मुझे पसंद है वो, I like it because I have everything at one place. मैं उस चीज पर हाइपर फोकस करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 6 months, एक साल, चलो ज्यादा बोल दिया मैंने, 3 to 6 months एटलीस्ट को एक चीज में जब फोकस किया जाए ना, दैट इज लाइक आई थिंक द पीक, दैट इज द बेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी दैट यू विल बी एबल टू गिव. सो दैट्स व्हाट्स अप. तो हाँ यार, तो मतलब मैं ऐसा ही चाहता हूँ. आई वांट things to be this way. And yeah, do go and watch my video. My video is up. My content is up now. I have just uploaded आज की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो देखो यार. एंड गो थ्रू द वीडियो, पूरी वीडियो देखो एंड आपको पसंद आएगी यार. यू विल लाइक इट बिकॉज दिस इज फॉर द पीपल who can't focus, the people who have problems studying properly, sitting with a task and doing things. And yeah, I'm late for the live stream. I said that I would be there at 5:30, but it's 5:50, so it's almost half an hour late. So I don't know how long this is going to be. I'm probably going to be here for a bit and then that's going to be it. यार इसका थंबनेल कुछ और तो नहीं आ रहा है. 26. इसका थंबनेल क्या आ रहा है यार, मुझे पता नहीं, चल रहा है. I'm a boomer when it comes to this for some reason. How do I see what it is? यार मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा थंबनेल है इसमें? इसमें थंबनेल की गड़बड़ तो नहीं है? इसमें मैं आ रहा हूँ ना क्या थंबनेल में? मैंने इसके लिए अलग से फोटो लिया था, पता है. यार ये YouTube इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मुझे मुझे है ना, मुझे थोड़ा टाइम बस दे दो यार. लेट मी चेक.
कैसे चल रहा है ये? यार मैंने जो डिलीट कर दिया वो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? ये यूट्यूब इतनी कॉम्प्लिक हाँ, डिलीट हो गया अब हो गया। ये मैं अपनी लाइव स्ट्रीम पे शिट यार मैं अपनी लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। ओके, ओके, ओके। नहीं, नहीं, नहीं। ओके। Yeah, life is all right. Life is working, and it has. What the hell? Yeah, it is working. It is working. It is as I expected. ठीक ही है सब कुछ। हाँ, ठीक ही है सब कुछ ठीक है। What's up, guys? What's up? So we're just. I don't know, man. I don't know. यार मैं ये प्राउडली बोलता तो था कि मुझे बक-बक करने का बहुत शौक है, लेकिन यार कितना बक-बक किया है मैंने आज आपको आइडिया भी नहीं है। कितना कितने लोगों का पूरे दिन बात यार कभी-कभी पक जाते हो आप बात कर के भी। सच में पक जाते हो, है ना? क्या ही बताओ भाई मैंने क्या ही बहुत बक-बक किया है आज मैंने। But like I'm done with my day task. Most of it I'm done with. Now the only thing I have to do after this is that I have to do my today's workout and I have to go walking, जो मैं more or less हर रोज ही करता हूँ. Yeah, I've been doing it in a streak now. It's been so easy for me to walk. Walking is actually like a bonus to my day. जब मैं like when I have a hard day, like walking really helps me get unwinded. So I love walking. I have been making it a practice on a regular basis. मैं हर रोज walking तो करता हूँ. Like for the last 2 weeks or so, I have been very like I have brought it back, and it's amazing. But there are two things like, again with this. The way I have been doing it, when I go for a walk, I carry my phone and I also wear my headphones. So I'm listening to music. I'm listening to pumped up hype music where it's like really motivating, it's really inspiring. So that is one way to do it. That is how I do it. But I don't recommend that actually. If you want to get the benefits of walk, right, where आपको walking से मतलब actually में बहुत सबसे best चाहिए ना फायदा, तो then you need to do it without music, without listening to music, without carrying your phone, anything, and you need to just completely get focused, very much focused. And once you're that focused, right, this is absolutely nothing. Just I don't know यार, मतलब वॉकिंग की बात ही अलग है मेरे लिए तो। मैं थोड़े दिनों में अभी मैं मोटिवेशनल म्यूजिक सुन रहा हूँ, नॉट मोटिवेशनल, मैं मेरी नॉर्मल प्लेलिस्ट सुन रहा हूँ। माय प्लेलिस्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हाइप म्यूजिक, ठीक है। तो या आई गेट रियली सुपर buzzed up when I go for a walk. I mean, I have that main character energy जब मैं walking के लिए जाता हूँ तो. So that is what I do. That is what I have left in my day. बस मुझे walking करनी है और gym जाना है, which will not be a big deal for me. Like मेरे लिए, in fact मेरे लिए best part होता है to go to the gym and work out. I think that is very easy for me. अगर मुझे चैन से like मेरा routine करने मिले तो मुझे मजा आ जाए. But मुझे gym जाने का यार मेरे लिए जिम जाना इजी होता है, like I enjoy going to the gym, but it's just that I have not been able to make the space to do that in the last few days or so. I don't even remember, like it's been 2 to 3 days जब मैं जिम नहीं गया हूँ last. So that's the update for me going to the gym. That's what I'll be doing for the rest of my day. And just give me a second, guys, I'll go muted. Sorry guys. तो यार आई डोंट नो व्हाट एल्स टू टॉक अबाउट। हाँ, मैं वॉकिंग के बारे में बात कर रहा था। सो
अबाउट वॉकिंग, हाँ, तो मैं मेरा मेरा दिन बस इतना ही बचा है मेरे दिन में। आई लव गोइंग फॉर वर्कआउट्स एंड दैट्स व्हाट आई विल बी डूइंग टुडे। एंड उसके अलावा मेरा सारा काम खत्म हो गया। यू नो, देयर इज दिस फीलिंग दैट यू हैव कि जब आप उठते हो एंड यू हैव सेवरल टास्क्स, राइट? आई हैव डन दिस फॉर इयर्स, दैट व्हेनेवर आई हैव टास्क्स, आई यूज्ड टू डू दिस, दैट मैं सिर्फ उठता था, लाइक, एंड पूरे दिन में मेरे मन में वो रहता था कि आई हैव टू डू दिस टास्क, आई हैव टू गेट दिस डन, आई हैव टू गेट दिस डन, बट वो होता नहीं था। यू आई डोंट नो इफ यू गेट इट, बट लाइक वो टास्क मेरे मन में होता था, मुझे टेंशन होती थी उस टास्क की कि मैंने अपने आप से ये वादा किया है, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस, आई मस्ट डू दिस, बट वो टास्क होता नहीं था। एंड उस टास्क की टेंशन भी रहती थी, so you could not be enjoying, you could not be doing anything. So that's why the best solution to this, and this is why I love routines, and this is all interrelated to your sleep also, that if you go to bed on time, you have a certain time, you have to do this, by the way, like you have to, if you want discipline in your life, if you want to make something that is worthwhile, you will need to be an organized person. And if you want to be an organized person, you will need to go to bed on time. And once you do that, you wake up in the morning, and the first thing that you do is that you just do your daily task, whatever you have set up. It is a challenge for yourself, it is your work. For me, for example, it would be making content, it would be writing, it would be like coming up with ideas, coming up with the problems that I want to help other people with through my content, and फिर बस उसको upload करना, to record it. That would be my daily task. That is, and then of course it would be the workout as well. Like the workout for me is very much an important thing. It's important, but at the same time it's relaxing as well. So it's like सोने पे सुहागा, क्योंकि लोगों को वर्कआउट से यूजुअली आलसपन होता है। मुझे आलसपन होता है, ऐसा नहीं मुझे आलसपन नहीं होता, बट लाइक आई लव डूइंग दैट। इट्स लाइक अ रिलैक्स, इट्स मतलब आई एम गोइंग आउट, आई एम एंजॉयिंग, लाइक अगर लोगों को बाहर जाना पसंद है तो मुझे ये पसंद है। लाइक आई लाइक गोइंग टू द जिम, लाइक इट्स समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग for so long, so goddamn long. I've been doing it since I was 15. I've been going to the gym. Of course, I've not been consistent. I've been on and off, where there are months in between where I'm not going to the gym, but it's something that I know I will do for the rest of my life. मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ इस चीज के लिए. So that's how I like to think about all of these things. That's yeah. There's one more thing now. It's meditation. I love doing meditation. I love meditating, but it's not a habit as such again. And I know how to get this done. ऐसा नहीं है कि मैं meditation नहीं कर सकता, मैंने किया है, मैंने consistently भी meditation किया है बहुत दिनों, but अभी तो नहीं हो पा रहा यार. So I haven't been. I think the only alternative to meditation is when you're deeply focused on your task, daily task again. So in that sense, like meditating does not remain an essential. जो हमें बोला जाता है ना, to get mindful, to be mindful, you need to meditate. But you know how you can avoid that? I mean, basically, you can't avoid that. Of course, you need meditation for, like, meditation. What is meditation? It's basically focus. It's being in a hyper focus state where you're focusing on one thing. You're just being mindful. You're focusing on the thing. Like for example, let's take this moment for example. अभी मैं बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं. Now, if I was to just stay silent, I was to just observe. I can even meditate while speaking. I was to just observe the way the words are coming out, the way they are, the way I'm coming up with those thoughts that I need to tell people or talk about, the way everything is, and like that. That's literally what it is. That's meditating. So you can meditate in any environment, any moment. It should not be an excuse. Ke you need a specific place, a time, something. No, no, no. You need half a minute. You need to start with half a minute, but you need to meditating क्या है यार? meditating सिर्फ इतना है कि आप अपने जब जब जैसे मैं अभी बैठा हूँ ना, so you start to observe. This will really help your focus, by the way, because that's literally what meditation is. It's focus. So अगर आप अपने माइंड में रखोगे ना इस चीज को कि बस कोई थॉट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अब वो थॉट आया,
Now I've just observed कि हाँ एक thought आया, if I just am mindful about that, क्योंकि usually क्या होता है, usually इतने सारे thoughts आते हैं but हमें हमें आदत भी नहीं होती, like for us that is normal कि इतने सारे thoughts आ रहे हैं, but that is not how it works. Like we are so much influenced by the kind of thoughts that we have or we get. Like for example, देखो मैं अभी बैठे बैठे मेरी आदत हो गई है now to grab onto my phone every few minutes, so that is an example of not being focused, that disrupts my focus, right? So that is what meditation helps with. So yeah, that's something that I want to be doing regularly, but I think I get my meditation quota from just doing my work. When I'm at my work, when I'm like this content, जब मैं content बना रहा हूँ, that I'm very much meditative state में हूँ मैं, क्योंकि मैं focus करता हूँ, like I'm only, for all I can care about is just the specific topic that I want to help people or guide people with through the problems that I have had, and how I can talk about that in a way that can actually help those people, how I can actually be honest in the guidance that I'm giving. That's literally how it works for me. Hi Raman. Hi. What's up, man? मैंने, yeah, you need to go back and listen to what I have just said. I have said a lot about my life updates and goals. Yeah, so Raman, you need to go and listen to what I have just said, because I have said quite a great deal of what I think about things. So go and do that. Or you don't need to do it if you're here. I or you don't actually. I will summarize it for you. And yeah, I was missing you by the way, Raman. मतलब बहुत दिन से I'm noticing your comments. Okay, don't worry. I know that you are one of the initial people. जो मतलब कितने टाइम से यार आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ. So it's been nice. You are some of the initial subscribers for this channel, and yeah, I will always remember that. I will always, yeah. I mean, there's a long way to go. We are at 126 subscribers now, and इट्स बिन क्वाइट अ जर्नी। एनीवेज, तो मैं आपको समराइज करके बोलता हूँ मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा था। आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ गोइंग टू द जिम फॉर मी इज अ टास्क, लाइक नॉट अ टास्क, लाइक इट्स अ बेसिकली, जैसे लोगों के लिए बाहर जाने का इतना ईजी होता है ना, लाइक दे लव गोइंग आउट फॉर एग्जाम्पल, या समथिंग दैट यू आर डिलाइटेड अबाउट, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी ईटिंग आइसक्रीम फॉर सम पीपल, आई डोंट नो, जो भी शौक हो इंसानों के, लाइक फॉर मी इट्स ऑलवेज बिन द जिम। So whenever I have the opportunity to go to the gym, like I really relish it. I मतलब मेरे लिए task नहीं है वो, I love it. It's not boring for me. It's like a reward for the day, and that's something that I've been doing. I well, I replace it. It's not always that I go to the gym. When I don't go to the gym, I will go walking. So that's how I do it. Like I just go on a walk. If I'm not going to the gym, I'll go on a walk, and because going to the gym, I mean, it's not a task. I love going to the gym. I cherish it. ठीक है, एक like that's something that I enjoy. So that's like it's. उसके अलावा मैं बात कर रहा था about how when you wake up, you need to do the most important task for your day, or whatever you think is your goal, whatever you think is your purpose. That is what you need to do. क्योंकि for me, it's always been the case that for me, it's always been the case कि जब भी मैं उठता था तो मुझे हमेशा वो रियलाइजेशन होता था कि एक टास्क करना है मुझे इस दिन के लिए। आई थिंक आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट बेसिकली मुझे
उस पे टास्क करना होता था, ठीक है? एंड वो टास्क मेरे साथ पूरे दिन स्ट्रेस में रखता था मुझे। आई यूज्ड टू बी टेंस्ड अबाउट दैट टास्क, बट वो टास्क मैं करता भी नहीं था। आई यूज्ड टू प्रोक्रास्टिनेट पूरे दिन, लेकिन वो माइंड में भी रहता था, ठीक है? मेंटल कैपेसिटी को खराब करता था कि आप यार सोच रहे हो ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। पता है आपको ये फीलिंग होती है ना कि ये भी करना है, ये करना है। For me right now, for example, it's content. Okay, every day I'm doing this consistently. I have to do it. It's something that I've made as my own goal. It's something that I love doing. It's something so I have to do it every day. So I have this in the back of my mind, right? कि जब तक मैंने ये नहीं किया मेरा ये काम बाकी है, या मेरे मेरे लिए जिम जाना बाकी है. So it always helps when that is the first thing that you do as soon as you wake up, instead of grabbing your phone or doing some other task or doing just getting going with the day. I went to study my book at 3. After I read one page, I fall asleep. How do I control my sleep? As I have completed my sleep at night, and due to this, I wake up till late night if I did not want. देखो, इसका ईटिंग हैबिट्स से भी लेना देना है रमन. Like depends on the kind of meal that you have had. Usually you will notice people saying that they are very sleepy in the afternoon. अगर आप चावल खा रहे हो and all of that, you are having rice and everything after meals, that you are likely to feel that way. इसके लिए ही मैं आपको solution दे रहा था ना, that like one of the things that you can do is that you have those deep work focus hours in the morning. As soon as you wake up, you have your syllabus, you have whatever you want to complete. For me it's content, working on my content, for going to the gym, going doing walking every day. ये मेरे लिए like these are relaxing tasks. Like content is my main task, and the other two are like something that I give myself as a reward कि मुझे वर्कआउट करना है, I want to go for walk. तो अगर आप सुबह उठ के ये चीज करोगे ना, तो आप में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी उस टाइम पे. एंड अबाउट you feeling sleepy in the afternoon, I have gotten that. Like I experience that sometimes. Like when I'll have a very heavy meal, I think it has to do with your meals. If you're having a lot of rice in the afternoon, you will feel sleepy. So in that case, it's fine. You don't have to push and focus. Try to focus when you are sleepy. You can just. It also can be the case कि आपको boring लग रही है वो book. So you have to somehow make it interesting for yourself. One option कि आप उसको अपने लिए interesting बनाओ. Yeah, the alternative is that either you make it interesting for yourself or take a nap, take a power nap, no problem. Just take a power nap in the afternoon if you have the time. Just give yourself 30 minutes or something of nap, and I think that will help with your problem. But again, you will feel sleepy when you're reading or trying to force yourself to do things. So one way to do it is also to be very much interested in whatever you're trying to do. So you need to know how to make things interesting for yourself. For example, for me, like if I know I'm doing a task and that is just like मेरे लिए मुझे पता है कि मुझे यार I have to do this and I have to get out of my way, like मुझे ये करके मुझे साइड करना है. So वो मुझे करने में थोड़ी आलस भी आएगी, and मुझे पता है कि there is a chance कि I will feel sleepy also when I do that. Of course, if it's the afternoon when everyone is asleep, when you're expecting कि यार दोपहर है, चलो मैंने खाना भी खाया, अच्छा मील लिया है, राइस वाइस. So I would also ask you like try and eat lesser rice in the afternoon, or do your work in the morning. Have Wake up early in the morning and do it, or reserve the night time for doing this. आपने जो बोला मेरे साथ रात को होता है, एंड दैट इज बिकॉज आई डू नॉट गेट इनफ स्लीप. तो मैं अपनी वीडियो एडिट करते करते लाइक यू मस्ट नो लाइक मेरी वीडियोस मोस्टली पहले पहले रात में ही आती थी. लाइक आई यूज्ड टू अपलोड एट नाइट. मैं रिकॉर्ड करता था रात को ही, एंड उसके बाद मैं उसको एडिट करके सो जाता था. सो मुझे ये करते करते भी नींद आती थी. सो देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं रात को नहीं अपलोड करता ना, सो लाइक एंड इफ आई हैव नॉट अपलोडेड अ वीडियो फॉर दैट डे, that does not mean that I have not recorded. I have recorded it always. Okay, मैं हर रोज वीडियो रिकॉर्ड करता ही हूँ. आई मेक इट अ पॉइंट. तो मैं somehow मैं रात को रिकॉर्ड करता हूँ, बट फिर मैं बहुत बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं एडिट करते करते मैं सो जाता था.
Like I used to be editing my video, and I used to fall asleep, and I used to wake up at 4, 5, 5, 6 something, and मेरी आँख खुल के मुझे पता चलता था कि हाँ यार वीडियो बाकी है अभी भी, तो फिर मैं करके इमीडिएटली डाल देता था उसको सुबह जो भी टाइम हो. So I make it a point to always do this. But यार रमन प्रॉब्लम क्या है आपकी? I want to study. I did not understand. What is your point? You can't control your sleep, Raman. Like the only way you can do that is you can get every day जब routine का time हो आपके sleep का, so get 7 to 8 hours something of sleep. For everyone it's a different time. बहुत लोगों के लिए अलग अलग time होता है. I have also heard this. I don't know how scientifically accurate this is and if it is true or not. But the shorter you are, okay, the smaller you are basically, the lesser sleep you need. So if you are bigger, you need more sleep apparently. So it varies, okay, but the general accepted rate is 6 to 8 hours. इतने घंटे की नींद आप लोगे तो आपको फिर नींद की दिक्कत नहीं आनी चाहिए. And it is also normal. Even if you take all of that sleep, then you still might feel sleepy in the afternoon. If you're having a carb heavy meal, क्योंकि हमारे डाइट में कार्ब्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वी आर वेरी मच प्रोन टू इट. Yeah, you have to start reading it in the morning. See, I'm not saying you have to start reading book. I'm saying whatever is your most important task for the day, you need to do that in the morning before you do anything else, even before you have breakfast. That is the ideal, and that is when I've experienced the most amount of productivity. I remember waking up early in the morning, and I used to code when I was in college. I used to just code. एंड लाइक मेरा दिन कितना बेटर जाता था उसके बाद, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में रहता था कि ठीक है, मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो मैंने खत्म कर दिया है, अब बाकी का देखा जाएगा, बाकी मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा. सो डिपेंडिंग ऑन द रेलेवेंस और द प्रायोरिटी ऑफ दैट टास्क, वी नीड टू स्केड्यूल इट सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को. फिर रात में आते आते अब यू गेट अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड. सो इट कैन बी 3 to 4 p.m. इफ you're waking up 5 a.m. to 6 a.m. in the morning. बाय 3 to 4 यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका दिन खत्म है, मतलब आपने जितना काम करना था आपने कर दिया. अब नाउ यू विल रिलैक्स, नाउ यू विल गो टू द जिम, यू डू अदर एक्टिव टास्क्स और व्हाटएवर. दैट इज द आइडियल. But if you feel sleepy, again, one more way to do this is that you can force yourself to get to work again and again. अगर आपको कुछ करना है, so you should be able to push yourself, and you should feel comfortable pushing yourself, because in life there will be a lot of times when you have to do tasks which you are not comfortable with. You might feel sleepy, whatever. Like, how are you going to manage then? For now, it's reading a book. For the later stage, it can be anything else. You need to understand the importance of doing things which feel hard. For example, you want to read right now, but you are falling asleep. So you know and acknowledge that reading is important for you, right? Whatever you are reading, it might be course material for your college, whatever, but like you need to read, right? So you will need to push yourself to do that. And I think that is some of the most important things in life, to push yourself when things aren't going your way, and to push yourself when you have to do difficult things, क्योंकि easy चीजें तो सारे लोग कर सकते हैं. मैं क्या कर रहा हूँ अभी? राइट नाउ आई एम आई वर्क, एक्चुअली आई वर्क 9 to 5. That's what I do for my living. And when I'm not doing my 9 to 5, I'm doing this. I'm doing content. I'm trying to focus on content. I'm trying to help people like me, people like my younger self, with discipline, with self improvement, with philosophy, which are things I'm very much interested in. तो ये कर रहा हूँ मैं, मेघना. और मेरे प्लान्स है, मेरे गोल्स है कि आई विल बी मेकिंग मच मोर कंटेंट थ्रू आउट दिस ईयर, एंड आई विल बी रियली टेकिंग इट अप द नॉच. मैं हर एक, जितनी भी प्रॉब्लम मेरी थी ना, लाइक व्हेन आई वाज यंगर, आई वांट टू हेल्प दैट वर्जन ऑफ मी, जो जो एक नीट प्रेप नहीं नहीं मेघना, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रेप. मैं कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर. आपको क्यों लगा ऐसा कि मैं नीट का स्टूडेंट हूँ?
What gave you the idea? nahi, anyways, I'm not a student, but yeah, I'm very much interested in ड्रॉपर. कौन है ड्रॉपर? रमन? मैं तो नहीं हूँ ड्रॉपर. आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट. लाइक मैंने कॉलेज खत्म कर दी है. आई एम नॉट अ स्टूडेंट एनी मोर. आई एम नॉट अ ड्रॉपर. आई हैव नेवर टेकन अ ड्रॉप. मैं भी नहीं हूँ. नाइस यार, नाइस. यार मुझे नहीं समझ में आता, सॉरी, कॉन्सेप्ट टू टेक अ ब्रेक, टू टेक अ ड्रॉप. I considered that. I know my friends who took a drop for competitive exams, and at least two of them. There were two of them, and I know that they regret it. I need aspirant who. Okay, Meghna, that's cool that you are a neat aspirant. तो आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हो, और मेघना, आई हैव मेड अ वेरी मच रेलेवेंट video for students who want to focus, for people who want to study, basically want to do some sort of a deep task, and they face problems in doing that. So you can watch my latest video which is up now. मैंने आपके लिए ही वीडियो बनाई है आज, समझ लो आप. क्योंकि I used to face these problems, difficulties all the time when I was trying to study. The main culprit with this being reels. I hate. मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ. I really hate. Okay, I really hate reels. I hate short form content. I can't stand short form content. मैं चाहता हूँ कि काश मतलब वो content exist नहीं करता यार. हाँ हाँ, वो रील वाली. आई रियली हेट रील्स, बाय द वे. आई हेट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. अगर अगर आप मेरे ये चैनल देखकर अगर आप कुछ भी एडवाइस लो ना इसमें से, सो मैं आपको सबसे बड़ी एडवाइस यही दूंगा जो आपकी लाइफ को चेंज करेगी. इफ देयर इज समथिंग दैट कैन इवन, लाइक वन स्मॉल एडवाइस दैट यू शुड टेक इज दैट, स्मॉल, नॉट स्मॉल, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड टेक अवे फ्रॉम दिस चैनल. आप देख सकते हो कि मेरे कंटेंट में भी बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई जिसमें मैं बार बार बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना बंद कर दो. स्टॉप वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. दैट विल रूइन योर ब्रेन. दैट विल take away your focus. It will won't let you focus on one thing. It will take away your attention span. It won't let you study. It won't let you focus on one task. आप मतलब आपकी लाइफ पता नहीं यार, आप बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में व्हेन यू वॉच रील्स एंड व्हेन यू स्टॉप वॉचिंग रील्स. हाँ, वो बहुत ईजी लगता है, ऑफ कोर्स, दैट यू जस्ट कम आउट ऑफ योर डे एंड टू एस्केप यू जस्ट वॉच रील्स, बट यू कैन रिप्लेस दैट. आई एम नॉट इवन आस्किंग यू टू स्टॉप वॉचिंग कंटेंट. यू कैन वॉच कंटेंट, बट लाइक कंटेंट लाइक दिस. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा कंटेंट देखो, ऑब्वियसली यू कैन वॉच अदर पीपल, बट आई वुड स्ट्रांगली से कि अगर आपको कंटेंट देखना है, सो वॉच एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एंड वो भी जो आपसे रेलेवेंट हो. डोंट वॉच कंटेंट विच यू नो इज नॉट गोइंग टू. बेकार की इंफॉर्मेशन भी नहीं लेनी. अगर फॉर एग्जांपल, अब मैं इंफॉर्मेशन के नाम पे, बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी होते हैं जो मतलब प्रोडक्टिविटी सारे मतलब हैक्स आपको देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं, बट इफ दे आर नॉट स्पेसिफिक, अगर आप देखकर उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो देन दे आर अ वेस्ट. सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट एज वेल. ओनली वॉच कंटेंट दैट इज वेरी मच रेलेवेंट टू यू, जो आपकी प्रॉब्लम्स को हेल्प करे, जो आपको इन सम वे आपको लगे कि आप ये देखकर यू आर गोइंग आउट टू बी अ बेटर पर्सन. ओके, आई हैव मिक्स्ड ओपिनियन अबाउट दिस एक्चुअली. यू कैन वॉच एजुकेशनल कंटेंट, यू कैन वॉच एज मच एज यू वांट. इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि मैंने ये बहुत बहुत ज्यादा किया है. ठीक है, मैंने कंटेंट, लाइक आई वाज एब्सोल्युटली एडिक्टेड टू कंटेंट एट सम पॉइंट, बट आई वाज एडिक्टेड टू good content. ठीक है, I will tell you this. I was addicted to self improvement content. I think that has made a difference in my life. The kind of people that you're around, they usually shape the way that you end out to be. ठीक है, इसलिए दोस्तों के लिए भी बोलते हैं ना कि ऐसे ही दोस्त रखो. You are the average of the 5 people that you spend your time with. तो इसलिए कंटेंट में भी अप्लाई होता है. The kind of people that you will watch the content of, that is who you will become. पास है यूट्यूब पे आए और आपकी वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ. दैट्स ग्रेट मेघना. तो आप आई होप आप वीडियो देखकर आपने कुछ सीखा होगा, एंड नाउ यू विल यूज दैट फॉर योर स्टडीज एज वेल. नॉट फॉर योर स्टडीज, फॉर जस्ट जनरल फोकस. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज, क्योंकि मेघना, इट्स लाइक अबाउट
फोकस इन जनरल, अगर आप कोई अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे ना, तो आप अपनी जिंदगी में कोई भी टास्क नहीं कर पाओगे। स्टडीज छोड़ो, आप कोई भी टास्क नहीं कर पाओगे। So it's very important that you get this message, and that is the kind of message that I want to pass on. मेरा टाइम टेबल आ गया यूनिवर्सिटी का, ड्रॉप ले लूं क्या? ड्रॉप ले लूं? रमन ड्रॉप क्यों लेना है यार? ड्रॉप क्यों लेना है? टाइम टेबल आ गया तो ड्रॉप क्यों लेना है? मुझे समझ में नहीं आया कुछ। अ, अरे यार रमन, कैसी बातें करते हो तुम भी? कोई ड्रॉप ड्रॉप नहीं लेना भाई, पढ़ना है, ठीक है? और पढ़ाई इज नो बिग डील, ठीक है? लेट मी टेल यू, पढ़ाई कैन बी डन। हाँ मुझे पता है यार, जोक था, बट लाइक पढ़ाई इज नो बिग डील यार। लाइक अगर आपको पढ़ाई करके, लेट मी टेल यू, अगर आपको पढ़ाई करके लग रहा है ना कि इट्स डिफिकल्ट, इट्स हार्ड, आप कहाँ से हो? मैं बताऊंगा एनीवेज। कमिंग बैक टू रमन फर्स्ट, तो मैं जो बोल रहा था कि पढ़ाई अगर आपको डिफिकल्ट लग रही है ना, देन आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू रमन, बिकॉज पढ़ाई इज जस्ट लाइक, मुझे लगता है कि अगर हमें कोई चीज सिखाती है ना पढ़ाई, सो दैट इज हाउ टू डू थिंग्स व्हेन यू डोंट लाइक देम, ठीक है? हाउ टू डू थिंग्स व्हेन यू डोंट लाइक देम। अगर आपको पढ़ाई जैसी इजी चीज, ठीक है मैं इजी बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, लाइक यू डोंट लाइक द पढ़ाई, दैट इज द पॉइंट, कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी करनी पड़ेगी। सो आप जैसे पढ़ाई करते हो ना, दैट विल डिफाइन कि आप रेस्ट ऑफ योर लाइफ में आप कैसे हार्ड थिंग्स करोगे, हाउ यू विल डू थिंग्स which you know are not like something that does not interest you. So it's I would tell you like this is a perspective कि you use it as an exercise, कि अगर आपको कोई चीज करनी पड़े जो आपको पता है कि I'm not interested in this, but how you react to it, how do you do it? Can you still study even when you know कि आपको ये पसंद नहीं है? मेघना, आप कहाँ से हो? I live, I don't know, I'm going to tell you where I'm from. I'm Gujarati, okay? I'm Gujarati. I'm from Gujarat. But I live somewhere else. I'm not sure if I'm going to tell that right now, but ठीक है, मैं हूँ, I'm गुजरात से हूँ वैसे। And सूरज कुमार, मैं I do a job. I work right now. I work, but my long-term plan is to do this, like be able to do this full time, to help students, to help people like myself get on a life of discipline, get on a life of self-improvement, get on a life of philosophy, and basically a lot of other things. That is my full long-term plan, that I want to move it. I want to step it up for content. किस चीज वर्क करते हो? किस चीज? मैं सूरज, आई वर्क बेसिकली, मेरा काम है, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूँ, टू टू टॉक, ओके? ठीक है, मेरा मेरा काम है बात करना मेरी कंपनी के लिए। आई हैव टू रिप्रेजेंट माय कंपनी इन मीटिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेस। आई हैव टू, या बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो आई वर्क इन सेल्स। I'm like, yeah, that's what I do. मैं कुछ नहीं करूँगी वहाँ पूछने। भाई मैं बीसीए कर रहा हूँ, अच्छा सा करियर बताओ ना। करियर यार मैंने भी वही किया है। आई हैव डन बीसीए एंड आई हैव डन एमसीए एज वेल। करियर क्या बताओ डीजे यश? माय एडवाइस टू यू वुड ओनली बी कि मैं आपको मेरे कंटेंट में काफी हद तक मिल जाएगी ये सारी जो भी मैं एडवाइस देता हूँ करियर को लेकर, एंड आई एम गोइंग टू probably make more videos like that for helping people with their career and how to decide mainly about their career. But like आप, आई थिंक कि करियर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी और से पूछ सकते हो। आई थिंक यू नो योर सेल्फ बेस्ट। सो if you want to do something for your career, it should come from your heart, it should come from your inside, and it is not something that you can ask from someone else. Of course you can take guidance, मैं आपको philosophy बता सकता हूँ कि आपको किस तरीके से decide करना चाहिए, but मैं आपको exactly नहीं बोल सकता ना कि आप ये करो वो करो। I am no one to tell you that. I won't be able to give you an accurate judgment. But cloud engineering देखो, डीजी यश,
सब अच्छा है, ठीक है, कोई भी चीज खराब नहीं है। मैं आपको एक माइंडसेट दे देता हूँ इसके लिए। when you are trying to decide what you want to do in your life, इट इज वेरी नॉर्मल कि लोग किस तरह से सोचते हैं। हम देखते हैं कि हमें हमें उस चीज को करके अच्छी चीज फायदा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपका एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लाउड इंजीनियरिंग। आप जाके देखोगे क्लाउड इंजीनियरिंग के फायदा क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, इसमें पैसे कितने हैं, इसमें कितनी आराम की जॉब मिल जाती है, आप ये सारी चीजें देखोगे, राइट। बट द वे वेर यू गेट समथिंग दैट इज एक्चुअली मेंट फॉर यू इज बाय आस्किंग योर सेल्फ कि how do I do something, like what is the bad part of it। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल क्लाउड इंजीनियरिंग करनी है, तो आप उसमें देखो कि जो क्लाउड इंजीनियर, द पीपल हु आर फेलिंग एट इट, व्हाट विल दैट इन्वॉल्व, लाइक फेलियर के बारे में सोचो कि अगर मैं क्लाउड इंजीनियर नहीं बन पाया, क्लाउड इंजीनियरिंग को क्या क्या करना पड़ता है, हाउ लॉन्ग डज क्लाउड इंजीनियर हैव टू वर्क, व्हाट आर द वर्क आवर्स लाइक, what are the risk involved, what does a cloud engineer have to do, they have to sit in their laptop for hours and hours long। so always look at a career, not the best part, look at the worst part कि what is the worst part of a career, and that will help you determine कि आपको कौन सी चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड बात रही आपको रोड मैप की, तो आपको रोड मैप मिल जाएगा यार, आप क्लाउड इंजीनियर डाल सकते हो यूट्यूब में, थोड़ी सर्च करो एंड उसके बेसिस पर अपने नोट्स बनाओ, ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठकर लिखकर डिसाइड करो कि कौन सी चीज पसंद है एंड टेक प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर दैट। अगर क्लाउड इंजीनियरिंग करनी है तो रिसर्च करना आपका काम है, मेरा नहीं। आपको कुछ पसंद आया है तो देन यू डू इट, ट्राई इट एंड गेट ओवर विद इट एज फास्ट एज यू कैन। अगर पसंद है तो करते जाओ, कीप डूइंग इट। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए कंटेंट है पसंद तो मैं कर रहा हूँ, मैं किसी को जाके पूछ नहीं रहा कि कंटेंट कैसा रहेगा, क्या मैं, नहीं यार, करो, पहले करो तो पता चलेगा ना। अगर अब मैंने पहले से किसी को पूछा होता स्टार्ट करने से पहले ये कि यार कंटेंट कैसा रहेगा, वो मुझे बताते नहीं कंटेंट अच्छा नहीं है तेरे लिए, कंटेंट में कोई स्कोप नहीं है, खत्म बात। ऐसे थोड़ी होता है। 4 लाख का हूँ, क्या करूँ, सजेशन दो भैया। बोल रहा टीचिंग में जाओ, हम कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। 2 साल गवर्नमेंट एग्जाम लाइक CGL। मैं आपकी बाय द वे दीजी यश, cloud engineering is really good and lucrative by the way, like if I work in that, I work in a company that does AI। मैंने कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक बता दिया, लेकिन हाँ, क्लाउड इंजीनियरिंग इज लाइक वेरी हॉट, ठीक है। as far as I know, cloud engineering is like very niche space, तो अगर आपको उसमें घुसना है, if you are actually interested, do the research, get into it, it's like scope तो बहुत है उसमें। and I don't like to say this thing कि scope, बहुत scope सब में है, ठीक है, scope जो भी आपको पसंद है उसमें है ही। so cloud engineering, go for it, but it's very niche, ठीक है। तो आपको if you are actually interested in it, only then you will be able to make it, but yeah, cloud engineering में scope है, okay। 2 साल गवर्नमेंट एग्जाम लाइक CGL और NPTC का तैयारी किया। सूरज, अगर आपने तैयारी की है 2 साल, तो अब पहली बात तो जो हो गया बीते कल को छोड़ दो, लाइक दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। आपने ट्राई किया, नहीं चला, मूव ऑन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टीचिंग करनी है, गो फॉर इट। टीचिंग हैज सो मच ऑफ अ स्कोप, दिस इज टीचिंग, यू नो। एज आई एम टॉकिंग टू यू, ये टीचिंग है। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू नॉलेज, दैट इज टीचिंग। दैट इज द स्कोप ऑफ टीचिंग। आप कितनी तरीकों से क्या क्या कर सकते हो टीचिंग को लेकर। सो Suraj Kumar, if you want to go and you think you have to do teaching, go for it. What are you waiting for? हाँ, मैंने आपका मैसेज पूरा ही पढ़ा है सूरज कुमार। आपने 2 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, यू आर 29 एंड यू आर आस्किंग कि आगे क्या करना है, राइट। यू आर आस्किंग कि टीचिंग में जाओ। आपका क्वेश्चन क्या है फिर, क्लियरली पूछो। डीजी यश, ओके। देख डाली, 1 साल से सोच ही रहा हूँ, मैंने ट्रेडिंग भी करी, पैसे नहीं थे, छोड़ दी। गेमिंग भी करी, लो डिवाइस, पैसे नहीं थे, छोड़ दी। रुक जाओ मेघना, मैं बोल रहा हूँ आपको। मेघना, क्या है क्वेश्चन आपका कि मैं कहाँ से हूँ, लाइक वेयर डू आई लिव। मैंने आपको बता दिया, आई लिव इन गुजरात। I mean, I am from Gujarat. I don't live there. I am from Gujarat. I'm Gujarati. So
भाई ब्रो, मैंने अभी ये नहीं सोचा क्या करूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, मैंने सभी करियर वीडियो देखे। हाँ, तो डीजी यश डिसीजन लो ना, ट्राई करो और डिसीजन लो। मैंने आपको इतना इतना बोला है, मैं यही कब से मैं रिपीट किए जा रहा हूँ ना, ट्राई एंड डू थिंग्स। अगर आपने ये सारी चीजें ट्राई की है, ठीक है, तो दैट्स पास्ट। अब और चीजें ट्राई करो, कम अप विद मोर ऑप्शंस। आप अपने देखो, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जिससे इट माइट हेल्प यू, व्हाट हेल्प मी, ठीक है डीजी यश, टू डिसाइड। सी व्हाट यू आर डूइंग विथ योर डेली लाइफ। आप देखो कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर टाइम। फॉर एग्जांपल, फॉर मी इट वाज वाचिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, अ सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट। कि मैं आई यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ फिलॉसफी कंटेंट, आई यूज्ड टू लुक एट बुक्स, एंड मुझे मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, मुझे पसंद आती थी बुक्स व्हिच कैन इंप्रूव योरसेल्फ, बुक्स रिलेटेड टू डिसिप्लिन, बुक्स रिलेटेड टू फोकस। तो मैंने कंटेंट इस चीज में बनाना शुरू कर दिया, बिकॉज क्लियरली दैट इज समथिंग दैट आई एम इंटरेस्टेड इन। So this is my passion and I have found it, and जब मैं ये करता हूँ तो it does not feel like work for me. Like for example, I'm trying to help you guys out here, it does not feel like work for me, it feels very natural to me कि मैं इसीलिए बना हूँ, ये मेरा पर्पस है। तो मुझे जितने लोगों ने भी जो भी बोला, I ignored them. I had a lot of people tell me different things. Why are you invested in this? What do you think is going to happen of this? It doesn't matter. What do I like? I like this. I like talking. I like speaking. तो मैंने कुछ अपने लिए निकाला ना। एंड बात रही कि क्या करूं, तो मैंने वो जो मैंने करियर वाली वीडियो निकाली है 16 मिनट की, आप उसको भी देख सकते हो। मैंने उसमें क्लियर 2 ऑप्शन भी दिए हैं, ठीक है। मैंने उसमें 2 ऑप्शन के साथ दिया है कि क्या कर सकते हो आप। इफ यू इमीडिएटली वांट मनी, इनकम, आप पे लोग रिलायंट है, देन आई हैव गिवन ऑप्शंस कि आप वो कर सकते हो। एंड इफ यू हैव सम 2 to 3 इयर्स ऑफ टाइम, तो मैंने एक तरीका भी दिया है कि आप कौन सी चीजें किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो गो गो हैव अ लुक एट दैट इफ यू वांट। मेघना, तो क्वेश्चन क्या है, पूछो ना फिर। भैया मेरा काश में पढ़ाता है, वो बोला रेफरेंस दे देगा। हाँ, तो सूरज कुमार, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम? जाओ और पढ़ाना शुरू कर दो। टीचिंग इज सच अ ग्रेट इंपॉर्टेंट स्किल, एवरीवन नीड्स अ टीचर दीस डेज, यू नो, दे नीड अ गुड टीचर। पीपल आर लुकिंग फॉर नॉलेज, people are hungry for knowledge. So if you get the ability, if you learn the ability to teach, there is so much of scope. This is teaching, like I said. आप कितना स्कोप है यार टीचिंग का। इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, देयर you will have a list of students who will look up to you. You are making actual knowledge. हाँ, और उससे पैसे भी तो आ ही जाएंगे ना। इफ यू गो एंड टीच इन अ कोचिंग, वेयर एवर यू गो टीच, यू आर, उससे पैसे भी तो आएंगे ना। तो पैसे भी आ रहे हैं एंड आपकी नॉलेज बढ़ रही है। while teaching others, आपको खुद सीखना पड़ेगा। So just imagine this, like it's so beautiful. If you think that that is something that you want to do, then go do it. This is teaching, by the way. Like, I am teaching right now, I'm trying to help other people through the knowledge that I have, and in order to have other knowledge, I will also have to learn continuously. I'll have to be a student myself so I can teach others, right? बट टेंशन है, स्कोप है या नहीं। यार वापस सूरज, मैंने आपको इतना समझाया, मैंने इतना यहाँ पे आपको बोला कि कितना स्कोप है यार, आप समझो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप आकाश में जाओ, आप पढ़ाने शुरू कर दो, यू विल गेट सो मच नॉलेज, यू विल लर्न थिंग्स, राइट। एंड एज यू आर टीचिंग अदर्स, आप तो खुद सीखोगे, एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट आउट ऑफ इट। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल अच्छी हो गई ना, आप लोगों को संभाल सकते हो ना, बच्चों को, देन यू कैन डू दैट, यू कैन मेक हैव योर ओन कोचिंग एज वेल। क्योंकि आप अगर आकाश में जाओगे, जहां पे भी जाओगे, पढ़ाओगे, अगर आपको पढ़ाना सीख गए ना आप, तो वो स्किल को आप फिर स्केल कर सकते हो। यू कैन मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको आपके एक सेट है ना, आपको आपका एक बार वो स्टार्ट हो गया ना, तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो अभी, इमीडिएटली। अगर आपको कुछ चाहिए तो स्टार्ट डू इट, स्टार्ट टीचिंग एंड फाइंड आउट। एंड ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वो कर लिया तो फिर आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन चेंज, राइट। अगर आपने कर लिया और आपको लगा कि हाँ इसमें स्कोप नहीं है, तो आप दूसरी चीज पे जा सकते हो ना। यू कैन ट्राई एंड कीप, यू हैव टू कीप ट्राइंग दैट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, दैट द अल्टरनेटिव। इसके आप यहाँ पे सोचते रहो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। मैक्स टू मैक्स 70K सैलरी ही मिलेगा यार। सूरज कुमार, सैलरी
सैलरी बढ़ जाएगी टाइम के साथ। मैंने बोला ना, बिजनेस का भी स्कोप है। अगर आपका खुद का कोचिंग हुआ तो आप जस्ट इमेजिन करो कितना कितना कमा सकते हो आप उससे। यू विल अर्न मच मोर देन दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट, राइट? So start somewhere. You have to start when you're starting a new skill. You don't have to look at the money, you have to look at what you can do for that skill. For example, मैं आपको मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ, तो मैं वही दे रहा हूँ। I'm starting okay with a lot of things. I started with what I'm currently doing. मैंने वो स्टार्ट किया था 1-2 साल पहले, ठीक है, 2-3 साल पहले इनफैक्ट मैंने स्टार्ट किया था। सो एट दैट टाइम मैं भी आपके जैसे ही सोचता था, मुझे लगता था कि यार इसमें तो ज्यादा स्कोप नहीं है, मैं क्या करूंगा। लेकिन एज आई ट्राइड डूइंग इट, एज आई लर्न डूइंग इट, अब उसका उस चीज का इतना स्कोप है ना, अब मुझे सामने से मुझे उससे बहुत अच्छी ऑफर मिली है, ठीक है। एंड द करंट वर्क दैट आई एम डूइंग इट्स वेरी कंफर्टेबल, लाइक आई डोंट like I have the leverage with me now. Like I don't have to go out and really work in terms that I don't like. And even monetarily I'm okay with, like, it's not that much, but it's okay for me right now mainly. And I know कि इसका future का बहुत बहुत ज्यादा scope है, and this applies to everything. और बताओ गाइस, क्या चल रहा है यार? यार मुझे बताओ, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है? हाउ मेनी पीपल हियर हैव वॉच्ड माय वीडियोस एंड हाउ डू यू फाइंड इट? डू यू फाइंड it useful? What kind of content would you like me to make more of? Do you think कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं जो आपको लगे कि आपको ज्यादा हेल्प कर सके? तो प्लीज मुझे यहाँ पे, या जब मैं पोस्ट डालता हूँ, मैं रेगुलरली डालते रहता हूँ, तो मुझे बताते रहो यार कि कौन सी प्रॉब्लम्स है आपकी, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस डाल सकूं। Aarti Singh, I want to start affiliate marketing. Yeah, that's great, Aarti Singh. That's amazing. Like affiliate marketing is great, but like उसके अंदर बहुत कुछ झमेला है यार. Like you'll have to set up systems for that, Aarti. So if you want to try, then go for it. Going to learn digital skills. हाँ, so yeah, learn digital skills. Those are like, they will be applicable everywhere. Affiliate marketing is everywhere. That's great. Do try that यार, मतलब सही है यार, because basically affiliate marketing में आपको सब कुछ घर से बैठ के लैपटॉप में ही करना है. So अच्छा, जितना एज हो गया ना, मेरा डर लगता है स्विच कर पाओगे या नहीं। सूरज कुमार, देखो एज, आई गेट इट, ठीक है, आपको लग सकता है कि एज हो रहा है, बट अभी अगर आपने कोई एक ऑप्शन नहीं चूज किया, तो देन इमेजिन व्हाट आर यू डूइंग विथ योर एज। एज तो वैसे भी निकलेगी, राइट? अभी आपने कुछ सोचा और आपने कुछ करना स्टार्ट कर दिया, तो एटलीस्ट आप कुछ तो बन जाओगे ना। फिर उसके बाद आप प्रोग्रेस करो, एडवांस करो, लाइक दैट इज हाउ लाइफ वर्क्स। अगर आप ऐसे ही मैं भी सोचता था, ठीक है, ऐसे लाइक एज तो निकलती जा रही है, मैं ये मुझे भी प्रॉब्लम हुई है, बट उस चक्कर में मैंने कितने साल वेस्ट किए पता है, जस्ट टू थिंक कि यार मेरी एज निकलती जा रही है, मैंने कुछ डिसाइड क्यों नहीं किया अभी तक। क्योंकि मैं सोचता था कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें भी स्कोप नहीं है, इसमें भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ? अल्टीमेटली अल्टीमेटली मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। मैंने सारी चीजों में थोड़ा ऐसे हाथ डाला, लेकिन मैं फिर उसको थोड़े ही दिनों में आई मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी मोटिवेशन नहीं थी। एंड मैं उस चक्कर में मैंने सिर्फ सोचता रहा, मैं कोई भी एक चीज में फोकस नहीं किया। मैंने अगर मैंने किया होता, सो आई वुड हैव वेस्टेड लेस अमाउंट ऑफ इयर्स। सो दैट इज माई लेस, लाइक दैट इज व्हाट आई वुड एडवाइज यू, सूरज कुमार, कि अगर आपने कोई चीज में आपको लग रहा है कि हाँ, मैं अगर इसको करूंगा तो मेरी एज जाएगी, तो एज तो वैसे भी जा रही है। अगर आप कुछ नहीं चूज कर रहे हो तब भी एज वेस्ट हो रही है। तो अभी जैसे आपने अभी डिसाइड भी नहीं किया, आप फ्यूचर में आप 2 साल बाद बोलोगे कि यार काश मैंने पहले डिसाइड कर लिया होता और मैंने एक चीज तो सीखी होती। एंड नो थिंग इज लिमिटेड, ओके, फॉर वन थिंग। ये जमाने में इफ यू लर्न वन थिंग, दैट हैज 10 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आरती यहाँ पे बोल रही थी कि शी वांट्स टू डू अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग के 50 यूज केसेस है, 50। मैं आपको यहाँ पे 2 बता सकता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट में काम आती है कि इफ यू हैव योर ओन कंटेंट, आप अब उसमें अपनी अलग अलग लिंक्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे भी लिस्ट करूँ कि देखो मैंने ये चश्मे पहने, ये लेंस कार्ड, ये लेंस कार्ड के चश्मे हैं, तो आप ये खरीदो, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो अगर इससे कोई एक ने लिया तो उसका हो गया ना, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एंड यू कैन सेट दैट फॉर डिफरेंट यूज केसेस। आप इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाओ, कहाँ पे भी बनाओ, डिजिटल एज है यार। सो सारी चीजों के हंड्रेड हंड्रेड यूज केसेस निकल सकते हैं। सो ऐसा कभी मत सोचो कि यार लिमिटेशन है, बस मैं एक चीज में फंस जाऊँ। आप एक चीज में नहीं फंसोगे। इफ यू डू, यू हैव वन स्किल, राइट, यू कैन यूज दैट टू एक्सपैंड योर स्किल सेट। I have wasted my 4 years in confusion and overthinking. Arti, then if you have, then the best option for you is like to start now, to start and focus on things now, and try and experiment as much as you can. Treat that as learning. Don't treat that as years that have been wasted. Treat that as learning. क्योंकि मैं बोलता हूँ कि वेस्ट कर दिया, लेकिन मैंने इससे बहुत कुछ सीखा. That is how I've been here trying helping you out. क्योंकि मैंने वो सीख कर मैं दूसरों को दे रहा हूँ ना वो. So now that is my leverage. No, it's not waste. मैंने गलत word use कर लिया. It's not waste, it's learning. ठीक है. Of course there is another alternative कि जहां पे आपने कुछ भी नहीं किया. Again, still it is not waste. It's not being wasted. You are learning things. You are learning what you don't like. सूरज कुमार, मैंने पहला स्टार्ट किया था 22 में, आई थिंक 22। एंड मेरी भी ये प्रॉब्लम थी आपकी जैसे। मैं भी ऐसे सोचता था कि यार क्या करूं, क्या करना चाहिए, ये भी करूंगा तो प्रॉब्लम है, वो भी करूंगा तो भी प्रॉब्लम है, एज तो जा रही है। दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई एम राइट नाउ आई एम 25। सो या, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब। I've taught in so many schools. Arti, that's amazing. I love English. English was my favorite subject when I was younger, and it still is. I love literature. It's not selling physical products. Yeah, Arti, I was just giving an example. I don't know exactly, but I like that's what affiliate marketing is, right? Basically, you're using it as an affiliate. So जो भी आप किसी और के products या जो भी service जो भी बेच रहे हो, I guess, and you're using, for example, it can be content, it can be through different channels, it can be on a website, right? Yeah, exactly. That's the case, Arti. Or do you read, Arti? What do you read? I have been reading. I'll tell you. I'll show you what I've been reading, guys. I have to. I'll do this thing, by the way. I have it planned. Don't worry. मैं इस साल बहुत सारा content निकालने वाला हूँ. I'll also have like books के बारे में videos बनाने वाला हूँ मैं. If I get the chance, like I'm going to make long hour guide, 2 to 3 hours guides, where I'm going to talk about books that I've been reading. I love books. Anyways, तो मैं आपको दिखाता हूँ. मैं अभी फोन में पढ़ रहा हूँ, कुछ तो पढ़ रहा हूँ मैं. Like what was I reading last? आपको दिखाता हूँ मैं. How do I? हाँ, तो मैंने इस I have read this book a little bit. ये आप मुझे कवर दिखाना है ना आपको. I've been reading the book called 4 Hour Work Week. That's basically a book. मैं आपको थोड़ा बोलता भी हूँ कि क्या होता है वो बुक में. इट्स अ 4 आवर वर्क वीक बुक जिसमें सिखाते हैं कि आप एक एक वीक में 4 घंटे काम करके कैसे अपने जीवन को जी सकते हो. हाउ यू कैन बेसिकली, इट्स अ प्रोडक्टिविटी स्लैश सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्लैश करियर रिलेटेड बुक. एंड इट्स रियली गुड, इट्स रियली अमेजिंग. आपको काम के बारे में बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स दिए गए उस बुक में. सो आई वुड रिकमेंड दैट, हाईली रिकमेंड दैट बुक. Aarti Singh, I'm going to start one teaching channel. Yeah, you should. You should, Aarti. You should start teaching channel if you that's what you want, if that's what you like. It's the age of making content. So go and join this journey and make content. And yeah, guys, I think that is going to be it. I'm going to wrap this up in the next 4 minutes. I'm going to this has been a good live stream. I loved answering your questions. So I'll be doing this more regularly on my channel. So make sure you keep switching on in these live streams where I will be answering all your questions. I will be interacting with all of you, and you can give me your updates, and I will give my updates. Teach English literature of BA2 and BA3 mainly of EU kind of request. Yeah, Arti, आपके लिए request आ गई. So
Thank you guys. Thank you guys for coming on this live stream. अच्छा हाँ यार, तो मेरा मेरा क्वेश्चन तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया यार. लाइक हाउ हैव यू बीन लाइकिंग माय कंटेंट? रमन, आप भी बताओ यार. I know you have been with me, like when on this channel since a long time. You are some of the oldest subscribers here. So बताओ यार, आपने लेटेस्ट वीडियोस नहीं देखी, ठीक है, आप बाद में देख लेना, या जब भी आपको टाइम मिले देख लेना, अगर आपसे रेलेवेंट हो तो देख लेना. बट टेल मी, अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट डू यू वांट टू सी मोर फ्रॉम मी? रमन बताओ, व्हाट डू यू वांट टू सी मोर फ्रॉम मी? डू यू थिंक दैट यू वांट मी टू मेक एनी चेंजेस? आपको ये फॉर्मेट ठीक है ना, लाइक जहां पे मैं कोई एडिट्स नहीं डालता, मैं सिर्फ अपनी एडवाइस डायरेक्टली देता हूँ? Because I'm never going to have edits. I think I'm not planning to do this. I'm only planning कि मैं इसको और लंबा करने वाला हूँ. I'm going to have 1 hour long guides in the future, and for that I will have to upgrade myself as well. I'll have to get to a spot जहाँ पे मैं 1 घंटे, मुझे बात करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइव स्ट्रीम का 1 घंटा हो गया, बट आई वॉन्ट टू मेक मोर लॉन्गर वीडियोस जहाँ पे मैं क्लियर गाइड दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा हूँ, करियर रिलेटेड हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड हो, हाउ टू गेट फोकस, हाउ टू improve your life, for people who are confused about their career, for people who are confused in general. Aarti, thanks a lot. Thanks a lot. I have a lot of it planned. I'm going to be very, like, I'm going to have a lot of stuff planned in the future. And is saal yaar, I'm working on a lot of ideas. I'm going to have things, okay? I have things planned. I'm going to make a lot of guides mainly, and I'm also going to have a calling system that I have planned. जहाँ पे मैं जिन जिन लोगों को लेनी होगी करियर के लिए, I'm going to give them one-on-one calls. I'm going to make that an option in the near future, not right now, but in the near future. I'm doing network marketing business also. Network marketing. I've never heard of that term like that, Aarti. What is the network marketing business? By the way, Aarti, अगर आपको मेरा चैनल आज मिला है, so you can go and watch the YouTube वाले videos. I have like videos where I have spoken about, जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि why you should post content even if nobody is watching. You can watch that video. I have given my story about what was an experience for me starting my content journey, and I think that you will find that useful if you are planning to start posting content. इन जनरल आपको मेरी सारी वीडियोस में कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा, ओके? एंड मैं यहाँ पे मार्केटिंग या मैं अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा. लाइक आई थिंक दैट्स जस्ट अ फैक्ट. Where you have to retail and recruit the people to your business. Where you have to retail and recruit the people to your business. Sure, I'll watch. Where you have to retail and recruit the people to your business. Okay, sure, Aarti. I'm not sure I get that, but ठीक है. मतलब मैं समझ गया, मैं जिस समझ गया, I guess. करो यार, ये देखो, ये जमाना ऐसा है ना कि आप एक चीज में खुश नहीं रह सकते, सस्टेन नहीं कर सकते. एंड लाइक दिस स्पेस, द इंटरनेट इज अ ग्रेट थिंग. सो यू डोंट वांट टू लिमिट योरसेल्फ. आप ऐसा मत बोलो कभी कि मैं सिर्फ ये कर लेना चाहता हूँ, मैं वो कर लेना चाहता हूँ. जितनी चीजें हैं, जितनी ऑप्शन है, सारे एक्सप्लोर करो, ट्राई करो यार. इंटरनेट इज द प्लेटफॉर्म. इट इज व्हाट विल गिव यू अ लॉट. You will learn a lot in the process. It's not like the olden times when you have to set a shop, you need money to set up a shop. There are so many options, and just the thought of it all excites me always. So yeah, that's the right way to use content, not scrolling on reels. Yeah, and I think I will wrap this up, guys. Thanks for watching, and I will see you in the next stream. Bye bye.